And latest on the Gurugram boy death case, the boy's father says in an FIR that he had intimated many times to the school authorities about the absence of a helper or attendant in the bus, but no heed was paid by the school authorities. The boy's parents have sought action against the bus driver and the school. Remember, we reported earlier today how an LKG toddler was killed by his own school van, and so far no arrests have been made in the case. The school driver, in fact, is still on the run. And I'm being joined by my colleague Alok, who's reporting from the incident spot in Gurugram. Alok, no arrests made yet. Why is it taking so long after all? I mean, an LKG student lost his life to sheer utmost negligence. And I can only imagine the plight of the parents. Yes, absolutely. The family is completely distraught, and here I am standing just outside the house of that 4-year-old kid, and this is the same spot where that incident has happened yesterday when he was just coming down out of bus, and at the same time the bus driver just drove the bus, and unfortunately in fact that the family members were present inside, and they heard the voice, the screaming of that kid, and they came outside and immediately they took him to the hospital where he died during the time of the treatment. Now the police has in the FIR, if you say that the family members has categorically said, the father has said that they had intimated the school many times that there was no attendant or no helper in the bus, and it is mandatory for any of the school in the transportation while dropping these kids, especially the pre-nursery or the nursery kids. There should be attendant in the bus, but there was no attendant, and that is categorically written in the FIR. Now the family wants justice. Here the family members, lot of family members are here. आप अंकल, आप बच्चे के दादा हैं, आप रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, कोई हमसे बात कर सकता है अभी? अच्छा, आप अभी हमें ये पता चला कि अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा हमें बताइए कल क्या हुआ था घटना? कल ऐसा हुआ जी, जब ये बच्चे को यहाँ छोड़ने आया 1:30 बजे जी, तो ना तो उसने हॉर्न दिया, ना उसने वेट करी, ना उस गाड़ी पे हेल्पर, बच्चा एकदम चिल्लाया बहुत जोर से। हम घर में से निकल के भाग गए यहाँ से, और उस बच्चे की मम्मी भी यहाँ सिलाई कर रही थी। अच्छा, बच्चा रोया, बच्चा उठाया, बच्चा जब भी बेहोश हो गया, हम तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए, वो गाड़ी लेके भाग गया। गाड़ी लेके भाग गया। ऐसा बताते हैं कि उसने गाड़ी रोकी नहीं और उसने 10-12 बच्चे जो बैठे थे उनको भी छोड़ा, लेकिन मतलब उसको इतना भी पता नहीं चला कि एक उससे इतना बड़ी घटना हो गई। उनको भगा के ले गया इधर गाड़ी को। अच्छा, भगा के ले गया। हाँ। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं सर आप लोगों से? पुलिस वालों ने FIR तो लिखा है और गाड़ी भी थाने में है, हम देख के आए हैं, सुबह गए पोस्टमार्टम के लिए जब। अच्छा, गाड़ी मिल गई है? हाँ, गाड़ी थाने में है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, स्कूल वालों को बार बार ये बोला गया कि बस में कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जब बच्चा छोटा बच्चा है, नर्सरी और प्री नर्सरी लोग चढ़ उतर नहीं सकता अपने हाथ से। हेल्पर नहीं है बस में, कोई हेल्पर नहीं है। मैंने उस प्रिंसिपल से भी बात करी तो उन्होंने बोला जी हम हेल्पर लगा देंगे। मैंने कहा बच्चा तो मार दिया, अब क्या हेल्पर लगाएगा तू? अब बोल रहा है प्रिंसिपल लगा। नहीं, कल की बात है। अच्छा, जब घटना हो गई तब आपने प्रिंसिपल से बात की तो क्या कहते हैं प्रिंसिपल? हाँ, वो कह रहा, बोला जी अब हम हेल्पर लगा देंगे। मैंने कहा बच्चा मर गया, अब तू हेल्पर लगाएगा? है। और इसके पहले भी आप लोगों ने कई बार कंप्लेंट की थी स्कूल में, हेल्पर लगाने के लिए बोला था। 4 तारीख को 5 को तो एडमिशन ही हुआ है। वो तो अभी एडमिशन हुआ है, लेकिन बच्चा भी कह रहा था अपने पापा से, पापा ये गाड़ी बहुत तेज चलाता। मैं कहा हम इसकी कंप्लेंट करेंगे ना, इस पे कोई हेल्पर है। अच्छा, और ये गाड़ी लापरवाही से भी चलाता है ड्राइवर। हाँ, ये बिल्कुल लापरवाही से उसने डेथ करी है इसकी। So he was only son of his parent, and here you can see the family members are here just coming after this. लीवर फटा है जी, पोस्टमार्टम आया, लीवर फटा, चोट लगी है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या चाहेंगे सर अभी आप? हम तो न्याय चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। So that is what the family wants, and definitely this is not the affair of this particular area. In fact, across country these kind of things kept happening, and many of the kids lose their lives just because of the negligence on the part of the school as well as these transport departments, and especially the transporters who are providing these bus without following any safety norms. With video.
back Yeah, to clearly, very grave allegations being made by the family members of this child. We heard how the kin just alleged that, in fact, the child had complained in the past of how the driver would be driving the bus extremely rashly, and the child had, raised an alarm. Not just the child, in fact, the father has also gone on to say that, we had raised an alarm over how there is an absence of the attendant in the school bus. But clearly, all those complaints only fell on the deaf ears, and here, it's extremely unfortunate how a family ended up being a victim of this utmost criminal negligence. Thank you for all those ground updates, Alok.